Hey everyone, in this edition of the Fluency series, I cover sentence structure which are rather different in approaches and style in English and in Hindi. So let's get the ball rolling with the first sentence. मैं आज सुबह जिम जाने की सोच रही थी पर ऐन मौके पर ऑफिस से कॉल आ गया. मैं जिम जाना फिर भूल ही गई और फिर बस वो कॉल ही चलता रहा. I was planning to hit the gym this morning but I got sidetracked by a work call that dragged on forever. Here we have used one collocation to hit the gym. Means we often use hit with gym in casual English language. We have used one phrasal verb here. To get sidetracked means to get distracted from your main focus, to get distracted from your main task. We can take example here. मैंने YouTube तो बस एक रेसिपी देखने के लिए खोला था पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं मीम्स देखने लग गई. I went on YouTube to check one recipe but before I knew it I got sidetracked and ended up watching memes. We have used another phrasal verb here. Okay, to when something gets stressed basically. We can take example here. मीटिंग तो बस आधे घंटे की ही थी पर पता नहीं क्यों वो पूरा 2 घंटे खिंच गई. द मीटिंग वॉज सपोज टू लास्ट half an hour but out of nowhere it dragged on for full 2 hours. Moving on to the another sentence. आजकल वो देर रात तक जगी रहती है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर सके लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए. She has been pulling all-nighters lately to wrap up her project but it is still not up to scratch. We have used here to pull all-nighters means to work all night long or working lately into the night. We can take another example here for that. मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना पसंद करती हूँ बजाय पूरे साल के. आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स who would rather like to pull all nighters before the exam instead of studying throughout the year. We have used here up to scratch means एक्सपेक्टेशन और टू सेट स्टैंडर्ड. कोई काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए. वी कैन टेक एग्जाम्पल हियर. हॉस्टल का खाना उतना अच्छा नहीं है जितना द हॉस्टल फूड इज नॉट अप टू स्क्रैच. मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस. मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपनी जॉब क्विट ना करे लेकिन उसने तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की ठान ही ली थी. आई ट्राई टू टॉक हिम आउट ऑफ क्विटिंग हिज जॉब but he had his heart set on starting his own business. Here we have used an expression to talk someone out of doing something means to persuade them against doing something. We can take another example here. वो तो अपना कबाड़ा करके ही मानेगा. उसे समझाने का कोई फायदा नहीं कि वो ये कोर्स ना करे. He has hell-bent on ruining things for himself. There is no point to trying out to talk him out of doing that course. So we can understand this particular expression here. Now we have used another phrasal verb here. To have your heart set on something means to be very determined to do something. Like we can take an example. गरीबों के लिए अस्पताल बनाने के लिए ठान ही लिया है तो फिर पूरा जोर लगा दो. Now that you have got your heart set in building a hospital for the poor, just go all out to make it happen. Here we have used an expression to go all out. So the meaning of this particular expression is to put in your best efforts. We can take example here. अगर आज तुम डिनर पार्टी होस्ट ही कर रहे हो तो फिर पूरा जोर लगा दो. फिर बाहर से क्या ऑर्डर करना, कुछ कैंडल्स जलाओ, अच्छा म्यूजिक लगाओ और कुछ खास पकाओ. Now if you are going to host a dinner party you might as well go all out, light some candles, play good music and cook something special instead of just order a lot of sentences. They all will help you to speak in English fluently. Thank you everyone.